So we have springs in series, right? Let's say I have a spring here and there's a force. The extension is X. The spring constant is K, right? The formula is F is equal to Kx. You know that, right? This F is what? This is the stretching force. This K is the spring constant. Then X is the extension that is involved, right? ठीक है? अच्छा, अगर आप के पास एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है और आप इन दोनों को सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज का मतलब है एक दूसरे के साथ बिल्कुल, उसके डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब एक ही उस कंटिन्यूटी में लगा देते हैं. लेट्स से द फोर्स इज F, right? And let's say that this is the spring constant of this is K1, the spring constant is this is K2. ठीक है, अब फोर्स इस पे भी उतनी लग रही है जितनी उस पे लगेगी, क्योंकि ये दोनों नेग्लिजिबल मास है. तो इसकी कुछ लेंथ चेंज होगी x1, कुछ इसकी लेंथ चेंज होगी x2. ठीक है, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? टोटल एक्सटेंशन इज x1 plus x2. Extension is sum of the individual extensions, right? x1 plus x2, right? ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाओ, एक स्प्रिंग यहाँ लगाओ, एक स्प्रिंग यहाँ लगाओ, और फोर्स हमारे पास F है, से लाइक दिस, ये एक्सटेंशन इसकी भी x है, इसकी भी x है, इसकी भी x है, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? 3x. दे गेट एडेड, राइट? सो टोटल एक्सटेंशन इज, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो तो एक्सटेंशन उसके अकॉर्डिंगली होगी, तो वो भी ऐड हो जाए. तो सीरीज में एक्सटेंशंस ऐड होती है. सर फोर्स इफेक्ट नहीं होता? नहीं, फोर्स जितनी इस पे लगेगी उतनी फोर्स इस पे लगेगी, उतनी फोर्स इस पे लगेगी. It's the same for everyone. Yeah, because yes, usually we assume that the negligible masses of the springs. So total extension is x plus x plus x, which is 3x, right? Is that clear? अच्छा, अब अगर ये इस तरह से ऐड हो रहे हैं तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स कैसे ऐड होंगे? So we have x is equal to x1 plus x2, for example, in this case, and x is f over k. This is, देखिए extension होती है ना f over k, because f is equal to kx. So extension is f over k, right? So this is f over k, this is f over k1 plus f over k2. We take f common. This is 1 over k. We take f common here. It is 1 over k1 plus 1 over k2. ये f से cancel हो जाएगा. And we get what? We get 1 over k is equal to 1 over k1 plus 1 over k2. We get something like this. 1 over k is equal to 1 over k1 plus 1 over k2. If the springs are in series, their spring constants are added like this. So this is, I think this is clear. अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है यहाँ पे, ये उस पे फोर्स लग रही है F और उसकी एक्सटेंशन हो गई है यहाँ पे 2x, और दो स्प्रिंग्स उसी तरह के लगे हुए हैं, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के, फोर्स लग रही है F, इसकी टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी? 4x. 2x यहाँ पे होगी, 2x यहाँ पे होगी. So total extension for this is 4x. You should know by all means that if the springs are added in series, their extensions are added. And if two springs of the same material are added in series, their extension is doubled, right? ठीक है जी. अच्छा, अब हम बात करते हैं springs in parallel. Any questions? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है सबको? Let us talk about the springs in parallel. Springs in parallel, right? We have a spring here like this. The force is F. The extension is X. If we add these springs like this in parallel,
द फोर्स इज F। अच्छा, अब होगा क्या, दोनों सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं लेट से, तो कुछ फोर्स यहां चली जाएगी, आधी आधी फोर्स यहां चली जाएगी, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ये था, तो क्योंकि F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी हाफ x/2, और इसकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी हाफ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि when the springs are added in parallel, the extension is halved. Total extension here is halved. ये मैंने किस तरह किया है, इस तरह से किया कि F इज इक्वल टू के एक्स है, तो F अगर F/2 हो जाएगा, तो इसकी आपने वर्टिकल प्लेन में देखना है, जितनी एक्सटेंशन इसकी होगी उतनी एक्सटेंशन इसकी होगी, वर्टिकली दोनों नीचे एक ही टाइम पे आएंगे, ये नहीं होगा कि ज्यादा ऊपर आ जाएगी ज्यादा नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सटेंशन हो जाएगी x इज इक्वल टू F/2k, but you also know that F/k is x, so the new extension is F/k, this is 1/2, so you get what x dash is equal to x/2, right? सर इस x डैश क्या मुराद है? नई एक्सटेंशन जो आई है, मतलब जो नई एक्सटेंशन आई है, पहले x थी अब x dash होगी, ये जो नई एक्सटेंशन आई है ये वाली ये पहले खाली x थी ना, ये वाली, अब x dash is x/2, न्यू एक्सटेंशन इज x/2, ठीक है, क्लियर। और सर यहाँ पर f और k आपने में से इसमें 1/2 कॉमन लिया है, तो फिर f और k कहाँ चले जाता है इसमें? एफ और के एक्स होता है ना, देखें यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के एक्स है, एफ ओवर के क्या है, एक्स। x मैंने समझ यहाँ सकते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूट पैरेलल, लेट्स से यू हैव अ स्प्रिंग हियर, you have a spring here, you have a spring here, you have force is acting here, तो अगर तीन स्प्रिंग्स होंगे तो इसकी फोर्स डिवाइड हो जाएगी, F/3 यहाँ चली जाएगी, F/3 यहाँ चली जाएगी, F/3 यहाँ चली जाएगी, इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी x/3, इसकी भी x/3, इसकी x/3, मतलब ये सारों की एक्सटेंशन सेम हो जाएगी। सो if three springs, their extension is 1/3, right? And also, if the springs are parallel, that is, if two springs are added in parallel, their extension is half, right? Their extension is half. तो ये आपका डिफॉर्मेशन वाला पार्ट खत्म होता है यहाँ पे, लेट्स से तीन ये लगे हुए हैं, और आप इसके नीचे जो है, नीचे भी इस तरह से इस तरह चल देते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, ये फोर्स तो इधर भी यही लग रही है और इधर भी यही लग रही है, ठीक है। तो यस सर। यहाँ यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगी x/3, और यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी, और उधर भी सब में x/3 आएगी, और यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगी x/2। अब ये पूरा एक सिस्टम है और ये भी पूरा एक सिस्टम है, ये समझ लें दोनों दो स्प्रिंग्स बन गए हैं इस तरह से, इसकी हो रही थी x/3, इसकी हो रही थी x/2, ठीक है। और अब आपके पास टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी x/3 प्लस बस x/2, x/2। which is 5x/6. This is what you do. ठीक है जी, all good. Okay, let's do a couple of सर questions. Meter when a weight of 15 Newton is supposed suspended from its lower end, and three of these springs are used shown to support 19 Newton weight. What is, अच्छा इसकी यहाँ पे जा रहा है 30 न्यूटन, इस पे भी 30 न्यूटन जा रहा है, इस पे भी डिवाइड हो जाती है ना फोर्स, और आप पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लें। स्प्रिंग कांस्टेंट इज
F is equal to kx. What is the force? 15. X is 6. So K is 15 by, ठीक है, 15/6 आपके पास आ जाएगा K, which is 2.5, right? Now the force here is 30 Newton, so you apply F is equal to Kx, and F is 30, K is 2.5, and the answer is, what is the answer? 12 B. So a 100-gram mass is suspended from a spring next to a vertical meter rule. The top of the spring is level with 0, 0 mark. The bottom of the spring is level with 27.2 mark. The 100-gram mass is replaced with a 600-gram mass. The length of the spring is now 89.7. देखिए उसने जब had was a mass of 100 gram, right? We had a mass of 100 grams, and 100 grams pe we have the length, which is, the length is 27.2 centimeters, right? Now, when the 100-gram mass is replaced with 600-gram mass, the new length is 89.7 centimeters, right? This means that the change in length, that is the extension, is what? If you subtract them, what is the 62.5. answer? The extension is what? 62.5. 2.5. If you subtract them, the answer is 62.5. So this is the extension. Mass is 500 grams. The change in mass is 500 grams, right? Now what you can do is that at 100 gram, you have this much, length. तो 100 ग्राम पे एक्सटेंशन चेक करें अगर आप, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हर 100 ग्राम के लिए 12.5 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ती है उसकी। अब उसने कहा 200 ग्राम मैस ऐड कर दिया, तो 100 पहले ही लगा हुआ था, आप इसके अंदर 100 और ऐड कर दें तो 200 ग्राम बन जाएगा। तो इस लेंथ के अंदर आप 12.5 दोबारा ऐड कर दें, इस लेंथ के अंदर आप 12.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 39.7। ठीक है, समझ